जय हिंद दोस्तों। तो मैं हूं भवानी और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्वेज। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं एक वीडियो लेके। आप तो पता ही है कोविड का सब चल रहा है, ठीक है, घर में सब बंद है। तो आप तो मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं और सब पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। आप तो ये मुझे पहले बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात ये है कि हम आज 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ हाउ शुड यू स्टडी, राइट? How should you study in your class, right? How should you represent yourself in your class, and how should you improve your knowledge by studying a particular topic, and what should be the trajectory of that? The next topic is how should you prepare for your entrance exam, especially in PhD entrance exams, because that was many of you were requested me to made that view. Now the third point is how should you perform in an interview, and especially what a professor actually wants from you. Okay, now the first topic is how should you study, right? So many of you you have some knowledge about how should you study, and I think well, I think you have read about Feynman's way of studying, right? So well, I'm saying that it is necessary but not sufficient. I want to add some my points into that. So let's analyze the Feynman way of learning one by one, and let's see what was my input of that. So the first topic is choose a topic. Let's say linear Witcher potential or a time dilation. Could be Green's functions, could be anything, right? Now, so after choosing a topic, what you did? Let's say you have a lecture on your class, right? Or let's say you have a lecture by any video, online video. So what you do? You write down in a note, right? So you must do one thing. After reaching video, you should make your own separate note. So in which write heading of linear Witcher potential, write it from the see resources what you have from PDF, from your lecture, college lecture, from an online video, right? You write it. Now what you do is you should make a space like this much. So what you write over there, the first point is what is its one line conclusion. For example, let's say time dilation. What is its one line conclusion? Its one line conclusion is when a body travels, when a body moves, time is relatively slow, right? So that should be there in the one line conclusion. What you understand? What is linear Witcher potential is telling you, right? What is antiparticle? What is Dirac theory? What is Feynman's interpretation of the antiparticle, right? That you should know. And the next thing is you should write in a simpler way what you understand from that topic, right? That you should know in that space that you should write. So this is the first point. The next point is you should discuss with your friends, right? In any group friends, in WhatsApp, in Facebook, anything. You should discuss with your class friends about that topic, right? You study time dilation or Christopher symbol, tensor analysis. You should discuss with your friends. You said, yes, could I able to understand it? Do you understand what I am telling to say? Let's see that how you perform and see what is your lack of that point. So then again go to that point, again go to the topic and revise yourself and see did you have improved yourself or not, right? So because in first semester we had a class on group theory. Okay, so there was not like on physics related at first. It was mathematical, like subgroups, groups theory, cosets, all these things. So it was very much boring was like. So we had some questions on doubt and we asked the teacher. So he said first that did you discuss with your friends first? We said no. He said do that first, and we did it. And actually, you will not believe that 60 to 70% of doubt was cleared, and the rest 30% was cleared by our sir. That is the way you should do, right? So that was the third point, and the fourth point. Sorry, the second point. But the second point, the third point is let's see that the analysis, that what is your lack of, and again start with the first one. Okay, you said that okay, this point I am lacking of.
So I have to do something. I have to again start with that and see that this point was, how can I clear? Can I get some other resources so that I can clear these topics? So you should think about it. Okay. So this is basically the Feynman way. This is the Feynman way. So is it sufficient? Yes. Is it necessary? Yes. Is it sufficient? No. Okay. So what was my input is, you should know what is the boundary of a theory, right? Let's say STR. STR is theory. Well, in general, we can say that every theory is correct in its own domain. Okay. So STR is theory on its own domain. Well, I mean special theory of relativity, and GTR is also fine on its own domain. I mean general theory of relativity, but STR is not correct in terms of GTR's domain, because STR is only valid for the inertial frame of reference and only valid in one direction. That's why it is special theory, right? Basically in positive x direction in which the frame is moving with a velocity v, right? That is the way you should learn. That is, you should ask yourself what it is telling, why I am learning this. That you should ask. And the next part is, you should know how should I test a theory. Let's say you did Coulomb's law. What Coulomb's law is telling you is that there is a charge, two charges, which is the rest, but the force is a constant k times two charges product divided by distance square, right? You should know that. How should I test it? If there is a two charge, if there is a one distance, 1 meter distance, and the charges are 1 coulomb each other, we should know that the force is between 9 into 10 to the power 9 Newton, right? If I halve the distance, if we halve, then the force will become 4 times, right? And if we double the distance, the force will be quarter of that, the original. That you should know, that how should I test it. In this way, every theory, Gauss law, Newton's law of gravity, time period of the pendulum, that you should know. And you should know that of which domain this law is valid. For example, let's say time period of a simple pendulum. We know that sin theta equal to theta, that's the approximation. So what happens if we didn't know the approximation? What happens if the angle of the oscillation is greater than 10 degree, or let's say 20 degree or 30 degree? Will that amplitude will remain constant? You should know about it. Okay, so I will talk about it later. So this is basically the first part that I was talking about. How should you learn? How should you study? The next topic I'm going to talk is how should you prepare for the entrance exams. Okay, the topic is, the point is, let's choose a topic, let's say Lagrangian dynamics. You should know that how many possibility of questions that can be found with that topic. How many questions from the Lagrangian you can have? There is a system of pendulum or double pendulum. You will be asked to find the Lagrangian of the system. So what you do? You find the T, which is kinetic energy. We find the potential B, then we subtract it and find the Lagrangian. And by solving the Lagrangian equation of motion, you find the equation of motion. And you see that what is the time constant, which momentum is constant, p theta is constant or not, p phi is constant or not, which parameter of momentum is constant, which is called the cyclic coordinates, right? So by the cyclic coordinates, we are getting much information about the system. Okay, so what could be the next way of questions is that find the equation of motion that I covered. Another is a Lagrangian is given, find the Hamiltonian. How do you do that? Or Hamiltonian is given, find the Lagrangian. So Hamiltonian is equal to summation of qi dot pi minus L. So what is P? P is Lagrangian, generalized momentum. Qi is generalized coordinate. So that should be the questions. So in this way, you should, let's say electromagnetic inductions, right? You should know that how many type of questions can a examiner ask, right? So how do you do that? Take a book, take a reference book, search for the exercise, how many questions it can have. See the previous year questions, see how the questions were asked before. Do that. Okay, and what could be, and always do practice the easy questions. Okay, that is the point. Why? I will tell you a secret today. I've never told anyone. The point is, you know that there was a December CISR net last year. So it was on Sunday.
So on the very next day, it was Monday, so we had a classical mechanics class. So when we entered the class, our professor asked us, how was the exams? We said, yeah, it was good, very good. Then he said, is there something like how was classical mechanics questions? We said, yeah, it was some moderate light. There was some question, it was very easy. There was non-linear dynamics questions, so it was very easy. And there was some questions on the Lagrangians and all these things, Gaussian bracket, canonical transformations, and generating functions. We do these questions. So there are some questions which were confusing. Then professor said that the question of the all classical mechanics of the net paper of December 2019 was said by him. Okay, and we didn't know that. So he said that there were some easy questions and it should be. Our intention is to test a boy or a student by easy question, not the difficult questions. If there is a 4 questions, we have to set the questions in such a way that that 3 of them should be attended by everyone else, and the last one question will decide the rank, right? So if you do not believe me, you can check last 3 years question of IT JAM, JEST, TIFR, GATE, NET, JRF. You will see that the questions were actually relatively easy than previous things, right? So now what you should do, you should practice for the easy questions. Just take a question, see for the 5 minutes. If you're taking on your mind, how should I do that? Then, well, try it. If you don't, then just leave it. Okay. Ask your senior, ask your professor whether you can solve it or not, and don't dare about it whether it can be solved or not. Okay. Try another questions. That should be your way of thinking and way of doing all these entrance exam questions. Because I have met many students that you talk for 1 hour, 2 hour and get confidence, lose by themselves. They said, right, I'm not doing those questions, I'm not doing questions, I'm very much confused. All this, don't do this. Try for 5 minutes, at least 7 to 10 minutes, then it's okay, then go. And when you are on bathrooms and all these things, oh, okay, that is the way. So you will proceed yourself. Okay, makes the theory clear, makes the basic clear. Okay, so that was the thing for how should you prepare for the entrance exams. Well, I'm thinking if I get any more point, I will add to that later, right? So now the topic that was most important, what could be interview and what a professor is expecting from you. Okay, so we will divide some classification about it. We will do a whole bunch to other institutes and one for only TIFR. Okay, now what TIFR is telling you is that they are diversifying their own areas. Okay, you will not get like areas in departments such DTP, DCMP, Department of Condensed Matter Physics, Department of High Energy Physics, Department of Atomic and Nuclear Physics, Department of Theoretical Physics, Department of Astronomy and Astrophysics in any institutes. Okay, probably it would be in ISC, right? ISC. So when people are joined, people जब join करते हैं, interview देते हैं, वो पहले से ही उनको divide कर लेते हैं, right? Whether it is in integrated PhD is in or in PhD. फर्स्ट ईयर तो वो पहले सब मिलके ही पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड सब मिलके पढ़ते हैं एक ही क्लास में, ठीक है? पर वो डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते. डिपार्टमेंट कब चेंज कर सकते हैं? जब क्लास में आप टॉप 2 और टॉप 3 के अंदर रहते हो, और अगर जिस डिपार्टमेंट आप जाना चाहते हो वो अगर फ्री है, ठीक है, तब वो जा सकते हैं. एक्चुअली क्यों, कितना, एक्चुअली आप देखेंगे कि इस बार भी कैसे कैसे बच्चे, मतलब डीटीपी में ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, डीएनएपी में कम हुए हैं, ऐसे ऐसे पूरा उनकी होता है, तो उनकी कुछ फिक्स नहीं होती. तो एक्चुअली वो कैसे डिपेंड करते हैं मैं बताता हूँ. वो कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, वो एक से होता है, मान लो कि 5 प्रोफेसर्स है डीएनएपी में, वो ये देखते हैं कि उनके पास पीएचडी स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, और कितने साल के बाद उनकी पीएचडी खत्म होने वाली है. अगर आप उनके 10 स्टूडेंट्स हैं और किसी के भी सब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उन पीएचडी में है, तो वो तो ले ही नहीं सकता वो के प्रोफेसर, क्योंकि उनके एक प्रोफेसर की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, वो कितने बच्चे ले सकता है, राइट? सो इट कैन बी टेक यू एज ए स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट्स. तो उनका ये होता है कि कितने खाली है, कितने वैकेंसी है कि वो एक बच्चे को ले सकते हैं. तो इन दैट वे पीपल आर गेट सिलेक्टेड,
in TIFR. Basically, that is the way. Okay. तो TIFR की सिलेक्शन वो क्या क्या देखते हैं मैं बताता हूँ. पहले तो ये है कि उनका मोस्टली रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल. तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल लेना तो आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी सिलेक्टेड. मैं ये बात सबको बता चुका हूँ. कमेंट्स में भी जितने भी यूट्यूब में मेरे वीडियोस में कमेंट डालते हैं या फिर पर्सनली मैसेज करते हैं तो मैं उनको यही बात बताता हूँ कि इफ़ यू चूज एक्सपेरिमेंटल यू विल गेट सिलेक्टेड. और मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट शुड यू चूज एज ए PhD thesis in theoretical or experimental or none of them. Okay, you will find surprises, many surprises about it. If there is a possibility you don't believe it myself, so you will see. Okay, so TIFR में क्या होता है कि वो एक तो एक जनरल टॉपिक पूछते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल पूछते हैं. आपकी रिसर्च अब देखिए कि इंटीग्रेटेड PhD में जो होते हैं ना वो बायस नहीं होते कोई भी टॉपिक में. वो जितना इंटरेस्टेड एटॉमिक फिजिक्स में होता है उतना ही इंटरेस्टेड न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है, उतना ही इंटरेस्टेड क्वांटम फिजिक्स में होता है. लोग तो बोलेंगे कि BSc में कोई अगर पूछेगा कि क्या टॉपिक में रिसर्च करना चाहता है बेटा, बोलेगा कि क्वांटम फिजिक्स में करना चाहता हूँ. तो क्वांटम फिजिक्स में ऐसा क्या रिसर्च है जो करने हैं, ठीक है, तो उनको नहीं पता क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में लोग कहते हैं ईजी है. ठीक है, लोग वन डायमेंशन बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर को देख के समझते हैं कि यही क्वांटम मैकेनिक्स है. लेट मी टेल यू दैट क्वांटम मैकेनिक्स द हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल. जितने भी आप पढ़े हो BSc में, quantum physics is the hardest of it. Okay, you will realize when you will come to MSc level. आपको कुछ समझ में, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि आप ब्राइट हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग घूम जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो रहा है, व्हाट इज स्क्रोडिंजर पिक्चर, व्हाट इज दिस हाइसेनबर्ग पिक्चर, पूरा घूम जाएगी उसमें. ठीक है, हाँ, उसकी सब्सिडियरीज में होते हैं काम, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब काम होते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉपिक में अब देखिए कि इंटीग्रेटेड PhD में तो ऐसे नहीं होते हैं, पर MSc जब कर लेते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं, पर्टिकुलरली बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि 4th सेम में उनकी स्पेशल टॉपिक होते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स या फिर जनरल रिलेटिविटी, मोस्टली हो जाते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं. तो PhD में इंटरेस्ट में वो क्या पूछते हैं, तो पहले तो ये कि वो कुछ जनरल टॉपिक्स पूछेंगे और जनरल टॉपिक्स वो ही पूछेंगे जिस टॉपिक का आप रिसर्च इंटरेस्टेड है. मान लो कि आप रिसर्च इंटरेस्टेड है कंडेंस मैटर फिजिक्स में. अगर आप कंडेंस मैटर फिजिक्स तो आपको 3 टॉपिक के ऊपर, जनरल टॉपिक के ऊपर महारत हासिल करनी पड़ेगी, विच इज फर्स्ट इज क्वांटम फिजिक्स, नेक्स्ट इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड अनदर इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. Statistical mechanics is very good. Why statistical mechanics is very interesting, that I will tell you in the next video. Okay, so we'll get many surprises about it, about this statistical mechanics. You will love statistical mechanics after that video. Okay, now let me come to high energy physics. In high energy physics क्या टॉपिक आपको पूछेंगे मेनली, आपको पूछेंगे क्लेन गॉर्डन इक्वेशंस, डिराक इक्वेशंस, एंटी पार्टिकल पार्टिकल थियरी, होल थियरी, फिर फाइमन्स रूल्स, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ज़्यादा नहीं पूछेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है. मे बी लिटिल बिट ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं. मे बी लिटिल बिट ऑफ फाइमन व्हीलर ऑब्जर्वर थियरी, वो कुछ पूछ सकते हैं. हाँ, तो करंट चला गया था. गांव में तो ऐसे होते ही रहते हैं, करंट तो चला ही जाता है. तो मैं बोल रहा था कि क्वांटम फिजिक्स, वी शुड लर्न अबाउट क्वांटम फिजिक्स वेरी मस्ट, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स. अभी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ही डिमांडेड है बिकॉज लास्ट ईयर वी गॉट नोबेल प्राइज फॉर द फाइंडिंग ऑफ द एक्सोप्लैनेट, राइट. नाउ अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स चूज करते हैं तो मेनी विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ओनली. There could be questions from the advanced potential, retarded potential, of the linear wizard potential. तो ये सब कैसे होते हैं, what is retarded potential, what is advanced potential. We actually had a class on this semester about this thing. So by the way of solving of Green's functions, non-linear Green's functions, then in this way we are getting a problem in which we have to find singularity, complex integrations, in which it's like something in the numerator and divided by denominator is x square plus omega square. So then x will be plus or minus I omega. So then x will be, one is plus I omega and then there is minus I omega. So in minus I omega you will see that there will be plus y axis, and plus I omega there will be a negative axis, y axis.
So for the positive one, you will get retarded potential. For the negative one, you will get advanced potential. Well, retarded potential is basically telling us that about the causality. Effect will be after the cause, that it is telling. And there is some terms called the Feynman-Wheeler observer theory, in which there will be points adding to advanced potential and retarded potential. Okay, and you should know about the atomic physics very well, that H1 H21 cm line, that thing directly related to that astrophysics courses things. Okay, so that was the thing that, okay, another is quantum information, quantum computing. There will be highly quantum physics. Okay, so quantum physics you should do must. You should be very good at quantum physics, right? Perturbation theory. Generally in quantum physics, in BSc, we are also studying non-perturbative theories, right? Non-perturbative situation. There will be no noise, there will be no heat effect, there is no sinusoidal potential, external potential, there is no electric field. For electric field, we have Stark effect. For external magnetic field, for a hydrogen atom, we have G-Man effect, anomalous G-Man effect, all these things. So that is, there is some things that you should aware of, all these things. And there may be questions which will be, you should know, and the professor that though they themselves realize that the student is don't know about that topic. For example, let me tell you example. So there is a friend of mine who was in IIT Guwahati doing MSc. He is now doing PhD in Aizer Mohali. So in Aizer Mohali, he has been asked that let's say there is a simple pendulum. We know that for approximation we take sin theta equal to theta. So let's say we took a large theta. Is there will be change in amplitude or not? Okay, we know that sin theta equal to theta for a small angle. If we take 20 degree or 30 degree, sin theta cannot be equal to theta, right? We take its approximation, its series, theta minus theta cube by 3 factorial plus theta 5 plus 5 factorial by 5 factorial, and so on and so forth. Right? In that way, when you see the time, actually the time period or the amplitude will actually increase, right? And the time period will increase. So you should test it actually. In the last video, it was just for fun. My cousins came and we had they were just fighting each other. So he said, okay, let me show you some physics stuffs, and yeah, they were so good. So there I also showed it that for 5 degree and 10 degree, and nothing, the time period is not changing. But if you increase the time the theta, the amplitude, the time period will change. It will increase, right? That you should know. But that question is from the nonlinear dynamics, right? Actually, when you discuss a theory, let's say superconductivity, that I will start superconductivity, because I was waiting, because you can see I was recording the mic with this one, because the mic I have ordered was fault. So I returned it and I'm again ordered it to maybe come with tomorrow or Tuesday, like this. So what I was talking about is nonlinear dynamics. So people, what professor, well, I was asking some professor that what you expect from a student during interview. We say that there may be a question, a complex questions. Okay, there may be some complication. We know that the student can't be answered, but by helping us, we will help him. How many minimum help he can able to take to solve these things, to solve that numerical. Okay, so let's take an example for superconductivity. जब नाम सुनते तो पूरा घबरा जाता है, अरे भाई सुपरकंडक्टिविटी क्या होता है? नियोडिमियम मैग्नेट को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो देते हैं, फिर मैग्नेट के ऊपर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मेसनर इफेक्ट होता रहता है. ये सब पूरा डिफिकल्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है. इवन कैन ए 12th स्टैंडर्ड boy can understand superconductivity. Is that much easier? That you will see that. Okay, that is the why I choose. Yes, I also understand it, right? And I think that you should also need it to understand, and it is also useful for the net JRF. So there is a double advantage of all of you. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर अब देखिए कि वो ये चाहते हैं कि कोई ये चाहता है कि बिना ही हेल्प लिए क्वेश्चन सॉल्व करे. अगर उनके सिलेबस के अंदर है, उनको अगर बीएससी सिलेबस के अंदर कोई पढ़ा गया है या फिर एमएससी सिलेबस
वो ये चाहते हैं कि आप बिना हमारी हेल्प लिए किए। अगर कुछ एडवांस टॉपिक्स है वो ये चाहते हैं कि जो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा हेल्प लेके कैसे कर दे। अब देखिए कि मान लो कि 30 क्वेश्चन है, फैक्ट बताता हूँ, मान लो कि 30 बच्चे आए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो उसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स है जैसे कि नॉन लीनियर डायनामिक्स पर एबल टू सॉल्व इट, ठीक है, और कोई बच्चे हैं जो कि हेल्प लेके सॉल्व किए हैं। तो आप बताइए कि किसको बोलेंगे, सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जिन्होंने बिना हेल्प के लिए सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यह है कि आप में इसीलिए मैंने बताया कि हर थियरी का प्रॉस एंड कॉन्स आप देख के चले कि इस अप्रोक्सीमेशन जो वी एज अ फिजिसिस्ट डू लॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, राइट? So what you need to do is you should ask yourself what will happen if we do not take this approximation, what will be the result, that you should know. That was my point. ओके, ये तो हो गया कुछ जनरल का मैंने जो बोला। फिर एक और बात ये कि जब जो आपकी स्पेशल टॉपिक होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कुछ होते हैं, और एक्चुअली टीआईएफआर में तो हमेशा एक्सपेरिमेंट पूछेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने टीआईएफआर बोला, और 10 इंस्टीट्यूट में मेनली जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसे होते हैं कि उनकी कोई स्पेशल टॉपिक ऐसे नहीं करवाए जाते, तो उसमें से बस जनरल क्वेश्चन ही ऐसे ही पूछते हैं। अगर बोलेंगे कि आपने कुछ किया हुआ है स्पेशल टॉपिक, अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो तो फोर्स नहीं कर सकते वो। और मैंने वैसे अभी भी बहुत कुछ ऐसे देखा है लोगों को कि जिन्होंने कोई उनका स्पेशल टॉपिक नहीं था फिर भी उन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली, बहुत लिए, मैंने देखा है। तो ठीक है, आप इससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, टीआईएफआर में उनका कुछ अलग होता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च टॉपिक आपको अच्छे से चूज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ जाने से पहले कि इस टॉपिक के ऊपर कोई बंदा रिसर्च कर रहा है या नहीं, कोई प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको वो चूज कर लें, ठीक है। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि आप जो चीज़ टॉपिक चूज किए हो, द टॉपिक यू हैव चूजन मे नॉट researching by any faculties of that respective institutes. Let me tell you a story. It was told by our statistical mechanics professor, Professor Shivaji Raha. He told me a story about Thanu Padmanabhan. He was emeritus professor in Ayuka, Pune. So I can talk about him 29 or 30 minutes, up to 30 minutes, but I think my time not permitting us. So let me briefly tell you a story. So in 1979, Thanu Padmanabhan completed his MSc in Kerala University and he joined PhD in TIFR in 1979. In 1980, you won't believe, in 1980 he joined as a faculty member of TIFR. Now in 1979, Professor J.B. Narlikar, professor in theoretical astrophysics, you maybe know about Hoyle-Narlikar theory. He was used Professor what was his name, Rai Chaudhary equation, right? In Kolkata, Rai Chaudhary equation. He was died in 2006. He is very good man. There is a classical mechanics written by him, very small thin book. I have that book. It's very good for the classical mechanics. Okay, so what I was telling about is that the Thanu Padmanabhan chosen a topic. It was not actually doing by anyone else in the theoretical astrophysics group. Actually, he did many good research in dark energy. He proposed that there is atoms in space. Atom in space. It was a very nice contribution to the dark energy field. Now, what he did is that during interview, he performed very good, and he himself studied very much. His first paper was on the age of 20 while he was in BSc about the general theory of relativity. Now, the interviewee was interviewing Thanu Padmanabhan sir, was go to Narlikar. He said, okay, here is the guy, Thanu Padmanabhan. He did really worked very hard by himself and he knows very topics themselves. So we think that we should take him. So he said, yes, we will take him. Narlikar said. Narlikar was, he is a very respected person, Professor J.B. Narlikar. तो टॉपिक में जो मतलब कहानी बताने का कंक्लूजन ये था कि हाँ, हो सकता है कि आप कोई टॉपिक चूज करें, जैसे क्वांटम ग्रेविटी में भाई अगर आप चूज कर लिया ना तो हर चीज़ आपको पूछेंगे,
फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल रिलेटिविटी, क्लासिकल मैकेनिक्स, हाँ ये सब, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि जनरल क्वांटम ग्रेविटी ये सब में क्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है, बाद में बताऊंगा नेक्स्ट, मैं प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट वाज द टॉपिक। कोई भी आप टॉपिक चूज करिए, कुड बी इन लेजर, कुड बी इन एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, कुड बी क्वांटम इंफॉर्मेशन, एनीथिंग। सो अगर आपने बहुत डिटर्मिनेशन है, अगर आपने अच्छे से खुद से बहुत अच्छा पढ़ रखा है, प्रिपेयर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो आपको ले लेंगे। वो ये चूज करेंगे कि अगर आपने क्वांटम ग्रेविटी या फिर क्वांटम इंफॉर्मेशन बारे में बता रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे रिसर्च इंटरेस्ट है उसके बारे में, और आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके डेप्थ एनालिसिस कुछ नहीं पता, मैथमेटिक्स कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही कुछ वीडियोस देख के आ गए हैं, भाई हमको रिसर्च करना है, नहीं लेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि और अब ये एक और बात है कि इंटरव्यू क्यों लेते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल ये कि 20,000 30,000 अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो बहुत आपकी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि 5 साल तक आपको यूज करना है, उसके वारंटी के साथ यूज करना है कि ओके इन 5 years आई विल यूज इट फॉर माई ओन पर्पज। इन दिस वे जब आप पीएचडी के लिए ज्वाइन होते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ज्वाइन होते हैं, वो प्रोफेसर ये चाहता है कि हम उसको सैलरी देते हैं 31,000, अभी तो ए फर्म में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 21,000 हो गया, और पीएचडी के लिए 37 to 38,000 हो गया, तो बहुत ज़्यादा ये, राइट। तो ये अगर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी आए वो परफेक्ट हो, वो ये चाहते हैं, ठीक है। तो वो तो इंटरव्यू लेंगे ही ऑब्वियसली, और एक्चुअली आईआईटीज में भी ऐसे ही करना चाहिए। जो मेरे सहमत नहीं है तो वो सहमत नहीं हो सकते, बट दैट इज द थ्योरी, दैट इज द well that is the result of previous year statistics, is that many of the students were gone to IITs were failed, were begged some papers, didn't clear the MSc even in 3 years. So ऐसे होता ही रहता है, IIT कानपुर में ही होते हैं प्रोफेसर, नहीं बताना चाहिए उनके प्रोफेसर के नेम, अभी वो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी टॉपिक में, उनकी क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर में, मतलब एक दो को छोड़ के सारे उन्होंने फेल कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कैस्ट सिस्टम होता है ऐसे कि जो 2000 3000 रैंक में भी होते हैं, वो भी जाते पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है, ठीक है। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी काबिलियत के ऊपर वो सीट मतलब डिपेंड करता है कि आप जानते हैं या नहीं, ठीक है। तो वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप उसको एनालिसिस करें, डेप्थ एनालिसिस करें हर टॉपिक को, हर चीज़ को, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राफ्स, यू शुड बी वेरी वेल विथ द ग्राफ्स। तो ग्राफ क्यों चाहिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, मैथमेटिका, GNU plots and other things, which can plot graphs. So what you can expect, what actually a professor expect from this to you? He want to see that how do you understand the graph. Let's say I am saying y equal to sine in bracket ln x. So you will see that okay, this is the graph and this is the graph. What he will test that whether you have find the range of the y between -1 to 1 or not, because this sine's range is sine function of sine's function range is -1 to 1, whether you did or not. If the function is increasing, what will be the effect in the result, right? That you should know. Is this strictly increasing? Is there an inflation curve? What will that depend on? What will be effect on the result? Okay. And एक और बात ये कि आपकी हो सकता है आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में नहीं हो, पर आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत ही मतलब ज़रूरी हो सकता है, राइट, ठीक है। और क्या रह गया बताता हूँ, वो बता दिया, ग्राफ बता दिया, ठीक है। और एक और बात वो ये सब पूछेंगे लास्ट में, वो आपको ये पूछेंगे कि करेंटली आपको, अगर आपको सारा सेटिस्फैक्टरी मिल गया, तो वो लास्ट को ये पूछेंगे कि आप ये जो कोचिंग मतलब इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आपको ये पूछे ना, तो आपकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ वो आपसे सेटिस्फाइड है कि आपने क्या क्या आंसर्स दिए हुए, और शायद आपको वो ले ले, राइट, ये हो सकता है। मतलब मैनी प्रोफेसर्स रिप्लाइड मी दिस दैट, अगर थोड़ा सा वो होते हैं ना, मतलब इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो ये पूछते हैं। हाँ, एक और बात बोलना भूल गया था, आप मैक्सवेल्स इक्वेशंस है ना, मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक इक्वेशंस,
ये कुछ कुछ बातें, माइक्रोस्टेट्स, मैक्रोस्टेट्स, पार्टीशन फंक्शंस, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कैसे पार्टीशन फंक्शन यूज करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स कैसे यूज करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत ही अच्छा चीज़ है। पैराबोलिक पोटेंशियल क्यों चीज़ है? पैराबोलिक पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट because this is the region why we have Higgs boson, right? This is the region we have to the symmetry, we find Lagrangian, we find a potential. सिमेट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि एक ऐसे ग्राफ होते हैं y = x², आपको ये चूज करना है कि अगर यहाँ पे एक साइड में अगर आप स्टडी कर ले कि उसका बिहेवियर कैसे है, तो इस साइड आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। या तो आपको इजी लग रहा होगा कि आपको ये पूछ सकता है, कुछ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इवन फंक्शन पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे पोटेंशियल हो सकता है। तो वो ऐसे देखते हैं कि लैग्रेंज हम चूज करते हैं एंड दे फाउंड व्हाट इज द सिमेट्री। इन दिस वे दे डिस्कवर्ड हिग्स बोसन। तो मैंने कुछ ज़्यादा इस टॉपिक को जा रहा हूँ, तो मैं खुद को रोक रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्वांटम में। आप ये देखें कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हर चीज़ में यूज़ होता है। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें क्वांटम मैकेनिक्स, तो इस चीज़ के ऊपर आप अच्छे से थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाँ, जैसे हो गए जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सब थोड़ा अच्छे से आप थोड़ा सा कर सकें। फिर लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी भी कुछ पूछ सकते हैं। अगर क्वांटम ग्रेविटी आप ले तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ग्रुप थ्योरी पूछेंगे। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की थोड़ा सा वो क्या होते हैं, थ्योरम्स भी पूछ सकते हैं। डायगोनलाइजेबल थ्योरम, सिमेट्री है तो वो कैसे डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं, हाँ, उसकी जो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ इट्स आइगन स्टेट्स होते हैं कैसे होते हैं या नहीं फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आप कैसे उसको प्रूव करेंगे। देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नो। और मैंने भी जो नाइजर की इंटरव्यू वाली वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर डाला हुआ है, तो उस PDF है। अगर आप उसको PDF को नहीं ओपन कर पाते तो यू कैन पर्सनली ईमेल मी, आई विल सेंड यू। ओके, सो दिस इज फॉर द टुडे। हाँ, एक और बात ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हर एक टॉपिक का, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द ओनली वे। और आप ऑनलाइन एंट्रेंस जो होते हैं ना, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लें, ठीक है। अपनी स्टडी को अपनी खुद देखें कि आप परफॉर्मेंस अच्छी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। और आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के बाद आपकी पढ़ाई का तरीका चेंज होने वाला है और चेंज हो सकता है। अगर आपकी पढ़ाई में कुछ चेंज होता है तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको बताइए अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, तो मोमेंटम थोड़ा सा अपनी उंगली का मोमेंटम लेके उस रेड बटन को दबाइए। और अभी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई जितने भी सामान थे सब मैंने रख दिया था हॉस्टल के ऊपर। सो आई ऑर्डर्ड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द अमेजॉन ऑनलाइन रिसोर्सेस। तो अभी हम डेली ऐसे वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। और आपको तो पता ही है कि हम सुपर कंडक्टिविटी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद टेंसर्स, फिर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे एडवांस टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स जो कि सिंपल टॉपिक्स है, जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन तो मैं डालता ही रहता हूँ अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अगर आप कुछ और चाहते हैं, मतलब वीडियो सॉल्यूशन दीजिए, हाँ, KFR के तो लगभग मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स मैंने सब तो डाल ही दिया है। और जो क्वेश्चंस होते हैं मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चंस पहले पोस्ट कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि आप कमेंट में उसकी सॉल्यूशन दे दीजिए। अगर कोई आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे तो मैं खुद उसको सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। तो आप बताइए कि मुझे क्या क्या चाहते हैं मेरे से, मतलब कौन से और कुछ सॉल्यूशन करूँ, तो मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर। तो मैं बता देता हूँ कि क्या टॉपिक है। सो द टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज नॉट दैट द वे वी थिंक। ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसे हर चीज फील्ड में यूज होता है, और वो कैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हम बात करेंगे। जय हिंद।